हेलो एवरीवन, आरएसी के शॉर्ट नोट सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम कवर करेंगे एयर कंडीशनिंग। सो लेट्स बिगिन। साइक्रोमेट्री क्या होता है? साइक्रोमेट्री ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एयर को कंडीशन करते हैं बेस्ड ऑन उसका टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करके फॉर रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस according to various climate conditions. Usually we call it as air conditioning. Use of psychrometric chart is very important, so we will start with this. Vertical axis is absolute humidity axis, this horizontal axis is dry bulb temperature axis, this curved axis is for wet bulb and saturation curve. If we consider one point on a chart and we need to find all its attributes, we can find it out like vertical line goes to dry bulb temperature, this blue line goes to enthalpy and wet bulb temperature. This curved line gives us the relative humidity of that point. If we go left horizontally, we get dew point temperature, and if we go right horizontally, we get absolute humidity of that point. And if we follow this steep line, we will get specific volume of that point. So in this way we can get all the attributes of air conditioning graphically. Next we will see how we can calculate this analytically. So let's start with important attributes of air conditioning. First is humidity ratio, which can also be called as absolute humidity or specific humidity, which is denoted by omega and can be written as 0.622 PV upon P minus PV, where PV is partial pressure of moisture content and P is total pressure of air. इसे हम mass of vapor upon mass of dry air भी लिख सकते हैं, and its unit is kg per kg of dry air. Next we will see relative humidity denoted by phi, which is equal to mass of vapor upon mass of vapor in saturated condition at given temperature and pressure. It can also be written as partial pressure of vapor upon partial pressure in saturated condition. So for saturated air, relative humidity is 100% or phi is equal to 1. For this, WBT, DBT and DPT all are equal, where wet bulb depression is equal to 0. Wet bulb temperature and dry bulb temperature are measured using sling psychrometer, in which dry bulb is bare and wet bulb is covered with wet cloth. These both parameters are very important. Next we will see degree of saturation or percent humidity, denoted by mu, which is the ratio of absolute humidity at given condition to the absolute humidity at saturated condition. If you write absolute humidity in terms of pressure, you will get this formula. So we can write PV upon PVS as phi and remaining term as it is. Next we will see how to calculate enthalpy of moist air, which is denoted as H, which is equal to 1.005 T plus omega into 2500 plus 1.88 into T, where T is dBT in degree Celsius and omega is absolute humidity. So this portion, it is called as enthalpy of dry air, which is CPT, and this portion is called as enthalpy of moisture content or water vapor. So if you observe mu and phi, mu is always less than or equal to phi. That is, degree of saturation will be always less than or equal to humidity ratio. If you like my work, please support me by subscribing to my channel. Now we will see Ebjon's formula, which is used to find out vapor pressure of moist air. So which is written as PV is equal to PV dash minus 1.8 P into T minus T dash upon 2700, where T is dBT, T dash is WBT in degree Celsius, PV dash is saturated pressure corresponding to WBT temperature, and P is total pressure. So this is very important formula and you have to use when PV is not given. Next we will see degree of freedom of moist air is 3. During compression, humidity ratio remains constant, and for hospital application like ICU and operation theater, 100% fresh air is supplied. For one particular pressure, dBT is constant. Next we will see various psychrometric processes. This topic is very important. Let's start. We will take blank psychrometric chart. Consider any state on the psychrometric chart. If we take this state vertically upward, we call this process as humidification, because humidity ratio is increasing and relative humidity also increasing. If we take same state downwards vertically, we call it as dehumidification, as humidity is decreasing, and these both processes occur at constant dBT. If we take the same state towards right horizontally, then we call it as sensible heating, because dBT is increasing but humidity is constant. And same, if we take this state to the leftward horizontally, dBT is decreasing
so we call it as sensible cooling at constant humidity. अगर हम सेम स्टेट को टेढ़ा लेके जाए ऐसे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, बिकॉज DBT इज इंक्रीजिंग एंड ह्यूमिडिटी रेशियो इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सेम इसका उल्टा अगर हम इसे नीचे लेके आते हैं तो इसे कहते हैं हम कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन. और हमेशा याद रखना, ये दोनों प्रोसेस में हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है. अगर हम प्रोसेस को इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो इसे कहते हैं इवापोरेटिव कूलिंग, जो हम डेजर्ट कूलर्स में यूज करते हैं, जिसमें कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन होता है. अगर इसके अपोजिट प्रोसेस में जाते हैं तो उसे हम केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन होता है. इफ यू ऑब्जर्व दिस G and H process, these both are along constant enthalpy lines. I hope you are liking this video. Next we'll move on to sensible heat factor. Sensible heat factor क्या होता है? Sensible heat upon total heat, which consists of latent heat and sensible heat. अब इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं? सेंसिबल हीटिंग लोड क्या होता है, जिसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सराउंडिंग का, और सेंसिबल कूलिंग में डिक्रीज करते हैं. तो सेंसिबल हीटिंग लोड 0.02 CMM इंटू T2 minus T1 in kilowatt. But CMM क्या होता है? CMM volume flow rate of air, which can be calculated as number of air flow into volume of room. Similarly, cooling load can be calculated as 0.02 CMM T1 minus T2 in kilowatt. अभी देखते हैं latent heat loads, जिसमें हम conditioned space की moisture content को कम या ज्यादा करते हैं. So latent heating load क्या होता है? 50 CMM into omega 2 minus omega 1. Latent cooling load होता है 50 CMM omega 1 minus omega 2. So इन दोनों loads का यूज करके हम सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी कॉइल बाईपास फैक्टर, जो कूलिंग कॉइल के लिए डिफाइन होता है. कूलिंग कॉइल का काम होता है इनकमिंग एयर को कूल करना. तो इनकमिंग एयर अगर T1 टेम्परेचर पे आ रही है और कूलिंग कॉइल से पास हो रही है, तो उसका टेम्परेचर आइडियली TC होना चाहिए, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है. तो इसे हम कहते हैं बाईपास. एंड एवरी कॉइल इज डिजाइन फॉर सम बाईपास फैक्टर. It is denoted as X, which is equal to T2 minus TC upon T1 minus TC, where T1 and T2 are incoming and outgoing temperature of air and TC is cooling coil temperature. अभी हम देखेंगे efficiency of coil. अगर bypass factor कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि coil efficiently work कर रही है. If n cooling coils are working in series, then we can say that combined bypass factor is X power n, where X is bypass factor of individual coil. Remember, revision is most important step of our preparation. Let's start with comfort air conditioning, जिसे हम comfort chart से represent करते हैं. Comfort chart is prepared by making DBT as x-axis and WBT as y-axis. Please remember this. Let's see what are the ideal condition for ह्यूमन कंफर्ट. जब नॉर्मल टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है और इफेक्टिव टेम्परेचर 20 से 21.6 डिग्री सेल्सियस होता है, along with 50 to 60% relative humidity, then human feel more comfortable as compared to other conditions. But what is effective temperature, how it contributes to human comfort, and what are the factors affecting it? So effective temperature is a temperature of saturated air at which human जो है वो सेम कंफर्ट फील करता है as that of conditions with unsaturated air, और we can call it as actual condition. अभी हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्टिव टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज सीजनल चेंज. अगर समर कंडीशंस है तो इफेक्टिव टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा. नेक्स्ट फैक्टर है एज और जेंडर का. यूजुअली ओल्ड एज फीमेल और चाइल्ड में इफेक्टिव टेम्परेचर जो होता है वो 2 से 3 डिग्री नॉर्मली ज्यादा होता है. नेक्स्ट फैक्टर है एक्टिविटीज का. अगर इंसान रेस्ट कंडीशन में है तो इफेक्टिव टेम्परेचर उस कंडीशन में ज्यादा होता है. फोर्थ है पीपल डेंसिटी. अगर लोगों की डेंसिटी ज्यादा है तो उस रूम में इफेक्टिव टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा. अगला टॉपिक हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ 2 स्ट्रीम्स. 2 स्ट्रीम हम कंसिडर करते हैं जो M1 T1 H1 एंड ओमेगा 1 कंडीशन पे, और सेकंड स्ट्रीम M2 T2 H2 और ओमेगा 2 कंडीशन में है. वो दोनों मिक्स हो रहे हैं और थर्ड स्ट्रीम फॉर्म कर रहे हैं जो M3 T3 H3 एंड ओमेगा 3 कंडीशन उसकी बन रही है. तो M3 को हम क्या लिख सकते हैं? M1 plus M2 because mass is conserved. Second is M3 T3 is equal to M1 T1 plus M2 T2, means there is no loss in heat as we are considering it as adiabatic mixing. So similarly we can calculate H3 and omega 3 where M is mass of dry air, but हम उसको
टोटल मास कंसिडर कर सकते हैं। इन्हीं 4 रिलेशन से हम नया एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं जो m1 और m2 का रेशो डिफाइन करता है in terms of enthalpy and omega, which is m1 upon m2 is equal to omega 3 minus omega 2 upon omega 1 minus omega 3, also equal to h3 minus h2 upon h1 minus h3। तो ये सारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। So that's it for today. Thank you for watching. If you are happy with my work, please do like, share and subscribe. Next upload will be on Monday 6 p.m. I hope you have watched previous video. If not, please do watch it. So see you on Monday. Keep studying, keep practicing, keep revising.